भी होती है। Today we'll be starting a new software, and we already have done with video editing and sound editing, and I've told you that we might, we surely will do another round of video editing when we will be using a little newer kind of a software, जिसमें हम लोग will be using Premiere, Adobe Premiere. But for now, we'll be starting a new application, Microsoft Excel. I hope everybody have Microsoft Excel with them. As in the start, I have told you कि हमारे पास जो है जो components हमने करने होते हैं AS के अंदर, वो major जो है वो it's video editing, sound editing, it's Microsoft Excel, and then it's Microsoft Access. So we have to master all these four components for our practical, paper to practical. Achha, now when we start Microsoft Excel, initially the people thinks about Microsoft Excel. It's a pretty simple, straightforward software which comes with some basic arithmetics, but it's not like that. It's more than basic arithmetics. Microsoft Excel, the what's of Microsoft Excel you can determine from the example I'm going to give, that Microsoft Excel is widely used in the businesses, in analysis, in banks. Whenever they want to analyze something, whenever they want to analyze something, they used to use Microsoft Excel. Though they have the customized softwares, यानी companies के पास अपने customized software होते हैं, उसके बावजूद जो है they come up with Microsoft Excel कि वो उसके अंदर थोड़ा सा काम करें. It's very interesting और बड़ा integrated किस्म का है, यानी मैं यहाँ तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन more or less यही functions, यही formula with different examples मैं जो हमारे CA के students होते हैं उनको भी मैं पढ़ाता हूँ. यानी CA के एक आर्टिकल के अंदर भी ये हमारे पास आता है. So इसका मतलब ये है कि ये किसी भी फील्ड के अंदर आप हैं तो एक्सेल ने आपकी जान नहीं छोड़ना. यानी you need to analyze things. बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, कहीं भी आप काम करेंगे तो यू नीड एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट आवर चलिए, Asim is back also. So screen share now. We'll be starting Microsoft with Excel. I prefer Excel 2013, but if you are using Excel 2010, 16, 15, any of the version, it's perfectly alright. All more or less in the same condition. यानी कि बहुत ज़्यादा शक्ल का ही difference नहीं होगा. यानी 2007 यूज़ नहीं करना, but you can जो at least you can use 2010, यानी जो अब नई shapes के साथ है. नई शेप से मतलब ये है कि ऐसा कोई भी वर्जन जिसके अंदर आपके पास ऊपर ये इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे यहाँ मेरे पास नजर आ रही है, यू कैन यूज दैट. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल is an application software. Remember one thing, Microsoft Excel is an application software. And what is an application software? Application software means, we will study that in the theory part. Application software means which can solve one problem of user at time. यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो वी हैव सो मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अराउंड अस, और इसको आप बड़े प्यार से एप्स भी कहते हैं. यानी व्हेनेवर वी आर इंस्टॉलिंग एप्स ऑन आवर मोबाइल फोन्स, इवन ऑन आवर PCs, तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरा नहीं बोलते. नाउ वी यूज्ड टू कॉल देम एप्स कि हम ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये ऐप है, वो ऐप है. So these apps means that they can solve your one problem. And if you have a video editing software or app, it means it can edit your videos only. That's it. They can't work on calculation. They can't work on anything else. So when we talk about Microsoft Excel, like when we talk about Microsoft Excel, it means an application software based on
numbers and works with formulas and functions. So what we say MS Excel is an application software based on numbers and works with formulas and functions. यानी इसका basically काम जो है it works with formulas and functions. Now, अब मैं ये चाहता हूँ कि if anyone can tell me what is the difference between formulas and functions. Is there any difference between formulas and functions? And if yes, what is the difference? Anyone? Adsam, Amin, Noor, Dullah. Adsam, what is the difference between formulas and function? It looks same. यानी जब हम start में करते हैं formulas and function तो ये बिल्कुल ये ऐसे ही लगता है कि it's the same thing. There might be no difference. But the difference is between formulas and function कि formulas means manual, whereas function mean जो कि आपके पास automated है. Automated to what we used to call here built-in, which are already available. हमारे पास जो already available होते हैं कंप्यूटर के अंदर for complex functions generally, but it can be used for the simpler function also. ये हमारे पास complex functions में use होते हैं और हम आम functions में भी इसे use कर सकते हैं. ये हमारे पास functions होते हैं. अब functions का purpose क्या है? Purpose ये है कि if I ask you to take out the average of 5 numbers. तो 5 numbers की average के लिए आप क्या करोगे? Let's say these are the 5 numbers 15, 20, 30, 25, or 11. These are the 5 numbers. Now the work will be कि आप इन सबको करोगे add करने के बाद next step पे करोगे आप इसको divided by 5 like this. So we will get our average. It's pretty simple, straightforward, जैसे हम हमेशा से करते हैं. But what we do here, यहाँ हम क्या करेंगे? We'll be using a function for. अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो ये काम मैंने किया, this is formula. और अगर मैं इसको किसी automated तरीके से करता, तो that would be called as function. Like function means कि I may use this average and write down my number. That's it. I don't need to tell my software that the software has to plus them, add them at the start and then divide it by 5. You don't have to do that. एवरेज लिखने का पर्पस ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको इतना थोड़ा सा अकल वाला होना चाहिए कि वो खुद से ये सारा काम जो है वो हमारे लिए फुलफिल कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फार्मूलाज एंड फंक्शंस का डिफरेंस है. Now back to Excel, its interface and how it works. Now I'll click on Excel. This is my Excel. और इसके ऊपर हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं. Excel के लिए एक और नाम जो है, we use another name for Excel. Do not write Excel in your papers. You have to write the word spreadsheets. Excel generally called as spreadsheet. If you notice your syllabus. In your syllabus, they only have written spreadsheets. They never talk about MS Excel because they don't want to promote any specific brand. There are more spreadsheets. Excel is one of them. Then there is another one from it's an open source company, Calc, C-A-L-C. There is another version of Excel जिसको Calc कहते हैं. जैसे Excel is from Microsoft, Calc is from OpenOffice. यानी OpenOffice एक product है जो कि आमतौर पे Mac पे और Linux में installed आते हैं. So ये हमारे पास एक और spreadsheet भी है. So you always have to write spreadsheet whenever you are attempting your paper.
डू नॉट राइट MS Excel. रीजन क्या है ये फिर आपको बताऊंगा क्या. So now the MS Excel, the interface. When we talk about the MS Excel interface, the interface you'll find if you have worked with Microsoft Word or you have worked with Microsoft PowerPoint, uh, you'll find more or less options very familiar. Like the starting part, ये जो cut shut वाला part है, the part which have font styles and all that. So काफी familiar चीजें you will find when you browse around. When you click on insert, you will find few new things. When you click on page layout, you will find few new things. So there are different things we have. So ये हमारे पास different चीजें जो हैं ये हो सकती हैं. अच्छा now, when we work with the spreadsheets, the most important thing is that we have to work with rows and columns. Now, what is meant by the rows and columns? So you have noticed that when I have opened Microsoft Excel or any spreadsheet, they basically looks like that. They have few rows, few columns. So when we talk about the vertical thing, that would be called as column. Don't get confused. काफी बच्चे जो हैं इसमें सोच में पड़ जाते हैं जब मुझसे पूछे. This is column. Vertical जो होगा, that would be called as column. और जो हमारे पास horizontal होगा, that would be called as row. और ये जो सेंटर में ये किसी भी जगह के ऊपर रो एंड कॉलम जिस जगह के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज सेल. दैट इज कॉल्ड एज सेल. सो वर्टिकल इज अ कॉलम, हॉरिजॉन्टल इज अ रो, एंड सेल is basically the intersection between row and column. Now this is very important. The intersection word is very important because I'll get back to this point again in a while, inshallah. So now, when we talk about Microsoft Excel, जो इसमें मेजर आपको नजर आता है इंटरफेस में, यही नजर आता है कि we have rows and columns और cells आपको काफी सारे नजर आ रहे हैं. When you move around, तो आप देखें जो सिलेक्शन है वो भी हमारे सेल लेवल के ऊपर सिलेक्शन होती है, इस सेल लेवल के ऊपर सिलेक्शन. Now, just out of curiosity, I just want to see कि ये कितनी दूर जाता है. तो देखो Z तो खत्म हो गया, 26 कॉलम खत्म हो गए, ये हम आगे जा रहे हैं. So we are moving around. और ये कहाँ तक जाएगा? इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की ये होती है कि हम कंट्रोल और राइट एरो की, control and right arrow key. If we press control and right arrow key, we can go to the end of our sheet. मैं यहाँ लिख देता हूँ. So if we want to go to the end of our sheet, we can do control ये वाली है. We know we don't have to press this plus. Plus means that we have to combine these control and arrow key. So when we press control arrow key, the Microsoft Excel takes me from any place to the end of the sheet. If I want to get back, I can press two things. Rather, I can do control. It's pretty obvious, I guess. ऐसे भी कर सकते हैं. और अगर आपने सबसे नीचे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं. सो इट्स अप टू अस व्हाटएवर. सो ये हमारे पास जो है इस तरह से हो सकता है. अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं तो इट्स टिल XFT, quite a few numbers. And if we want to go down there, you can see we have more than 1 million rows. So इसका मतलब it's not a small software. 1 million rows अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब you can write 1 million records. तो 1 million records तो it's quite a records, तो काफी. अब ये देखो मैंने लेफ्ट एरो की प्रेस की, मैं ए पे वापस आ गया. मैंने टॉप एरो की प्रेस की, मैं 1 पे वापस आ गया. और अगर मैं ऐसे करता कंट्रोल होम तो तब भी मैं जो है वो shifted me to the first cell. अगर मैं कंट्रोल होम प्रेस करता, सो ये भी हो सकता है. अच्छा, अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफ यू वांट टू सिलेक्ट योर कंप्लीट कॉलम, इट्स वेरी सिंपल. डोंट डू दिस, ये ना कीजिएगा. ये सिलेक्ट करना शुरू कर. ये जा रहे हैं जी, मैंने कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट करा. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. ऐसे ही है कि 70 के ऊपर जो है गिलगित जाने की कोशिश करने लगता है तो वो कई दिन लग जाएंगे.
So now what we can do, we can click here on the column name. You can select the complete column. You can select the complete row. Even you can select the complete sheet by clicking here. ये देखो हमने यहाँ कॉर्नर में क्लिक किया, complete sheet हमारी select हो गई. अच्छा, you might notice that कि जो हमारे पास पहले वाला सेल होता है वो जनरली जो है वो आप देख रहे हो ब्लैंक सा रह जाता है, but that doesn't mean it's not selected. It is selected. It's a part of it. So you don't have to see this filled color. What you have to see, this outline. ये outline जो है that will show you कि हमारे पास क्या क्या है. अच्छा, अब इसी तरह रो का मामला है, ये रो हमने सिलेक्ट कर लिया. अगर हमें किसी वक्त कॉलम का साइज छोटा या बड़ा करना पड़े, व्हाट वी कैन डू इफ यू वांट टू एडजस्ट आवर कॉलम साइज और रो साइज, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक द एंड ऑफ योर कॉलम. सी इफ आई कैन क्लिक एंड ऑफ माय कॉलम एंड आई कैन ड्रैग इट. तो मैं जैसे जैसे ड्रैग करूं ऊपर आपको बता रहा है कि साइज क्या है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम एग्जामिनर में आस्क यू कि मुझे विड्थ, आई नीड द विड्थ 15 point something. So you can go this way. Or what you can do, you can right click and you can use the column width. So both ways work perfectly. Or if we want to work with the row sizes, right click, row height. So you can adjust the row height as per your requirement. Right now we have a 15 row height, and if you want to increase or decrease the row height, you can do that. Can anyone tell me what is meant by the 15? 15 is written without any unit. Is it 15 inches? Asim, is it 15 inches? Abdullah. सर सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब भी ये हो गया कि ये तो 4-5 इंच तो बन ही जाएगा ना, नहीं? कितने सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स वी हैव इन एन इंच? लाइक 2 पॉइंट समथिंग, इसी तरह ही है ना. सो ये तो बहुत ज्यादा, ये 4 इंच तो नहीं मुझे लग रहा. आमतौर पे हमारे कंप्यूटर्स में जो यूनिट यूज होता है दैट कॉल्ड एज पीटी. पीटी स्टैंड्स फॉर पॉइंट्स. 72 pt in per inch. 8 इंच में 72 pts होते हैं पॉइंट्स. सो आमतौर पे जो आपका फॉन्ट होता है, फॉन्ट से रिलेटेड जो चीजें होती है उनकी जो साइजिंग होती है इट्स बेस्ड ऑन पॉइंट्स. द यूनिट वी यूज इज कॉल्ड एज पॉइंट, पीटी. ये याद रखना है, ये A2 में बहुत काम आएगा व्हेन वी वर वर्किंग विद इलस्ट्रेटर. ये जो हम पिक्चर एडिटिंग और ये पोस्टर बनाते हैं ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जाहिर है कि आपको कोई कहता है कि जी मुझे बिलबोर्ड क्रिएट कर दें, ये नहीं, बिलबोर्ड आपने एक बड़ा वाला बना के देना है, तो आपको मेजरमेंट नहीं पता होगी तो आप कैसे बना के देंगे. यानी उस पर कितना बड़ा कैरेक्टर लिखा हो, कितनी बड़ी तस्वीर नजर आ रही हो. और इसी तरह कोई कहता है कि जी मुझे एक फ्लायर बना के देना है, तो फ्लायर के ऊपर जाहिर है फिर उस हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं. So calculation is very important, especially when we are working with the drawings and all that. Excel में तो जाहिर है calculation important है. So the unit is PT, points. You can increase or decrease the PT's points as per the requirement. The requirement may belongs to you or may it is asked by an examiner. It doesn't matter अगर हम कहेंगे तो हम कर देंगे. That won't be a problem. Now, Excel मैंने कहा कि it's a number based. It's a numeric based application software. If it is numeric based application software, it should come up with some tricks. Tricks के साथ इसे आना चाहिए. Some of you might know already about these tricks, but मैं सारी जो है वो बताऊंगा. Like what we do, if I write 1 and I need this 1 for like 10 times, मुझे 10 दफा ये 1 चाहिए, तो what I can do? I can do that. तो मैं सिंपली, ये देखो ना, ये अभी मेरा जो कर्सर है, पॉइंटर है, इट्स अ हैवी प्लस. ये हमारे पास एक प्लस बना हुआ है और काफी तगड़ा सा प्लस है. जब मैं इसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर चला जाता हूँ तो ये प्लस चेंज हो जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस साइड.
जिसमें चारों तरफ एरो होता है। दिस साइन इज रिप्रेजेंटिंग सिलेक्शन। जब मैं इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा, ये देख रहे हो, ये हमारा 1 जो है ये मूव हो रहा है। इसको मैं जहां प्लेस करवाना चाहता हूं उसको प्लेस करवा देता हूं। मैंने प्लेस करवा दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लस साइन विदाउट द एरो सिंबल। मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके देखो मैं इस पर ड्रैग करता हूँ, ये हम ड्रैग कर रहे हैं। ये जो ड्रैग है ना, इसके लिए भी दो नाम है। टेक्निकली, as per the bookish knowledge, it is called as fill series. But देसी जबान में हम इसे जो है we used to call it dragging. हम ये कहते हैं कि हम ड्रैग कर रहे हैं। तो ड्रैग ऐसे ही होता है, पकड़ा एंड देन घसीटा, उसे ड्रैग। सो इट्स ड्रैगिंग। तो मैंने यहाँ से उसे ड्रैग कर लिया, ठीक है, फेयर इनफ, हो गया। और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक नंबर लिखा, एक नंबर लिखने के बाद जहां तक मुझे वो नंबर चाहिए वहां आके सिर्फ मैंने एक दफा F4 प्रेस कर दिया, वो रिपीट भी हो जाता है हमारे पास। F4 का मतलब होता है रिपीट बेसिकली। नाउ अभी हम इसे पॉइंट सर से देखते हैं, ये हमने कर दिया यहाँ तक। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार ये तो ट्रिक ना हुआ। ट्रिक तो ये होता है कि ये 1 2 3 4 5 आता है, क्योंकि नंबर के साथ काम करना है, इसके बगैर कैसे काम कर सकते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट दैट I have written 1 और मैंने सेकंड सेल में लिख दिया 2. What's the difference between these two values? 1 और 2 के दरमियान में डिफरेंस क्या है? I mean, what is the difference between 1 and 2? I'm not talking about shape, Zahira. I'm talking about the number. Say it's in order, like it's adding one to itself. The difference is 1, right? The difference between both number is +1. The is 1, and when we +1, जब हम ऐड करते हैं +1, तो it means कि it would be taken as 2. So ये हम एक उसको रूटीन बना के दे रहे हैं. Now what I can do, I can select these two values. मैं दो वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूँ. सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ कि मैं पहले सिलेक्ट करना जरूरी है, और सिलेक्ट देखो मैं कैसे करूँ, मैं सेंटर में से जाकर सिलेक्ट करूँ. सिलेक्ट किया दो वैल्यूज को, कॉर्नर में गए, एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट ऐसे. आप ड्रैग कर दिया, हमारे पास नंबर आ गया. क्योंकि जो डिफरेंस था बिटवीन 1 एंड 2 दैट वाज अ +1, तो जब मैं उसे ड्रैग करूंगा तो इट वुड बी लाइक +1 3 +1 4 +1 5, ये +1 होता जाएगा. ऐसे ही मेरे ज़हन में एक और चीज आई कि यार उल्टा चलाते हैं. तो उल्टे के लिए 15 एंड 14 लिख देता हूँ. 15 एंड 14 लिख के जब मैं ड्रैग करूंगा तो जाहिर है उसको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उल्टा भी चला रहा है. और मैं इसको जान के नीचे तक लेके आऊं ताकि यू कैन सी कि वो माइनस में भी ले जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितनी देर आप उसे ड्रैग करोगे वो ड्रैग होता रहेगा, या फिल सीरीज, व्हाटएवर द नेम यू वांट टू यूज. हम ड्रैग करेंगे या फिल सीरीज करेंगे, वो हमारे पास ड्रैग या फिल सीरीज होता रहेगा. सो आप इसको पॉजिटिव्स में जितने का भी डिफरेंस बताएंगे, जितने के भी डिफरेंस का मतलब ये, इफ आई राइट लाइक द ऑड नंबर्स 1 एंड 3, उसको ऑड नंबर्स का नहीं पता, उसको ये पता है कि 2 का डिफरेंस है 1 एंड 3, 1 3 5 7 9 11 वो ले. और अगर मैं कहता कि लेट्स से 2 एंड 4, सो 2 एंड 4 पे हमारे पास जो है वो इस तरह से 2 एंड 4 हो जाता है, हमारे पास हो गया. अच्छा, और अगर मैं 10 का डिफरेंस देना चाहता तो मैं 10 का भी डिफरेंस दे सकता हूँ, तो कोई मसला नहीं, हम कर सकते हैं. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने 3 वैल्यूज लिख के ड्रैग नहीं करना. दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. 3 वैल्यूज में ना वो चौथी वैल्यू के लिए एवरेज लेना शुरू कर देता है. देखो ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 3 5. मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, अब मैं ड्रैग करता हूँ. देखो अगली वैल्यू उसने क्या प्रिज्यूम की है कि 6.33 है. उससे अगली वैल्यू क्या कर रहा है, ये आएगा, ये आएगा. 3 वैल्यूज के साथ आपने एक काम नहीं करना.
क्योंकि उसको ये लगने लग जाता है, वो तीनों वैल्यूज के दरमियान का डिफरेंस निकालता है, उसको डिवाइड करता है, डिवाइड करके जो डिफरेंस आता है वो आपको यहाँ दिखाना है। सो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, यानी इस तरह का काम नहीं करना, दो के साथ करते हुए इट्स परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा, अब क्योंकि मैंने कहा कि ये दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर एनालाइजिंग योर डेटा, एनालिसिस कैन नॉट बी कंप्लीटेड with the name of months के बगैर तो करना इसको बहुत ही डिफिकल्ट है। सो व्हाट वी कैन डू, देखो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ या कॉर्नर से जाके, और मैं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, नजर ज़्यादा बेहतर होगा। नाउ द मंथ नेम्स, इफ आई राइट दिस वे, मैंने लिखा है और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो मेरे पास ये ड्रैग मंथ नेम्स। और मजे की बात यह है कि इफ आई राइट ऐसे भी होगा, और अगर, और ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह करें, आप साइडवेज में भी कर सकते हैं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। लेट्स से कि मैं साइडवेज में कहूँ ऐसे, ये क्या हुआ, ये तो पूरा पूरा लिखाने लग गया। जब मैंने उसे वर्टिकल किया तो वो एब्रिविएशंस के साथ चल रहा था। नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाई इट्स लाइक द फुल फॉर्म, बताएगा मुझे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज स्ट्रेंज। Abdullah, what do you think? सर उसको प्लेटफॉर्म पूरा मिल गया लिखने को एक जगह पे। अच्छा, कोई और, अमीन, व्हाट डू यू थिंक? अब्दुल्ला वाली बात ठीक है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने उसको वर्टिकली ड्रैग किया है तो वो लाइक मैंने 3 कैरेक्टर्स लिखे थे, एब्रिविएशन लिखा था, वो एब्रिविएशन के साथ ही ड्रैग हो रहा है। जब मैंने उसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग किया है तो वो पता नहीं पूरा क्यों लिखा हुआ नजर आने लग रहा है। जून जुलाई अगस्त देख लो पूरा लिखा हुआ, जगह अभी भी पूरी नहीं मिल रही अब्दुल्ला। जगह पूरी करने के लिए ना हमारे पास एक ऑप्शन होती है, इसको बोलते हैं ऑटो फिट। ऑटो फिट में देखो क्या होगा, तो यहाँ के डबल क्लिक करूंगा, देख लो ये अब जगह पूरी हो रही है। सेल के एंड में आके बस डबल क्लिक कर दो, जगह पूरी हो जाएगी। जी अमीन, क्या जवाब है आपका कि ये हॉरिजॉन्टली पूरे लिखे हुए, वर्टिकली ये सिर्फ एब्रिविएशंस थी? वाई? सर शायद इसलिए क्योंकि जो हमने शुरू में लिखे मैं, इससे स्टार्ट किया था मैं सर, वो भी फुल फॉर्म में था और कैपिटल में था शायद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, या दैट्स द रीजन। में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 3 ही कैरेक्टर्स होते हैं। अब जब उसने फुल फॉर्म देखी तो उसने फुल फॉर्म में ड्रैग करना शुरू कर दिया, यानी कि क्योंकि मैं एब्रिविएशन लिख रहा था तो एब्रिविएशन के साथ कर रहा। लेट्स से कि देखो मैं यहाँ मार्च लिखता, फुल लिखा, और जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देख रहे हो पूरा लिखा हुआ दिखाएगा, उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल लिखा है तो वो कैपिटल चलाएगा, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल चलाएगा। सो द कैच वाज, जो यहाँ थी कि वो ये थी कि हमने क्योंकि मे से ड्रैग किया है तो उसको ये लगा कि मे जो है वो पूरा है, तो आप शायद पूरे ही लिखना चाहते हो। अब ये देखो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास फुल ना आ रहे हो या वो पूरे नहीं आ रहे तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डबल क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो जाए। नाउ weekdays. Now, when we talk about the weekdays, how they work, weekdays will work the same way. MON लिखा, मंडे है। देखो जब मैं सिर्फ डबल क्लिक करता हूँ ना, सिर्फ डबल क्लिक करता हूँ इन दैट, तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी इसके पैरेलल वैल्यूज हैं, जो जितनी मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो उतना उसको ट्रैक कर देगा। डबल क्लिक किया, देखो नीचे तक ट्रैक कर दिया इसके मुताबिक। और अगर आप खुद से करते तो यहाँ क्लिक करते, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, फिर दोबारा से वो जितनी दफा ड्रैग करते जाओगे वो चलता जाएगा। एंड द सेम गोज देयर कि आप अगर ऐसे लिखते मंडे पूरा तो पूरा मंडे लिखा जाता, और वो अगर पूरा नहीं आ रहा तो हम
हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डबल क्लिक करके उसको ऑटो फिट कर देते हैं, हमारे पास जगह जो है थोड़ी सी पूरी हो जाती है, यानी वो ओवरलैप ना कर रहा होता टू द सेकंड सेल। नाउ द थिंग इज, नाउ द थिंग इज कि हमारे पास जो है फ्राइडे सैटरडे आ गया, अच्छा हाँ, now work with the dates. Now when we work with the dates, see how date works, 22 Feb 2020 मैंने लिखा। अब देखो जब मैं इसको ड्रैग करूंगा मेरे पास डेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हैं, आपको साइड से लिखी नजर आ रही है, और क्योंकि दिस ईयर इज अ लीप ईयर तो आपको 29 फेब के साथ जो है 29 फेब तक नजर आ रहा है, देख रहे हो। इसमें एक्सेल का बेसिकली कोई कमाल नहीं है, डेट उठा। बेसिकली एक्सेल पिक्स द डेट फ्रॉम द बिल्ट इन डेट मॉड्यूल। ये जो आपका डेट का मॉड्यूल होता है गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो ये उससे उठाता है जो भी यहाँ डेट्स की सेटिंग होगी, जो भी पैटर्न्स होंगे वो पैटर्न उठा के वहां पर। इसलिए आपके पास जो है उसने 29 फेब तक ही किया है और वो 31 फेब तक नहीं ले गया, या वो 28 तक उसने नहीं रखा है क्योंकि इसका लीप ईयर है तो वो उसने लीप ईयर उसे कंसिडर किया। सो 1 3 4 5 6 7 8 9 मार्च तक हमारे पास जो है वो डेटा। बट समवन आस्क्ड मी कि जादू तो बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड ट्राई, but I don't want the increase in the value. What I want is सब में 22 फेब लिखा। प्रॉब्लम ये है कि एक तो तरीका इसका मुझे ये ज़हन में आता है कि what I can do 2022 फेब 2020 ये मैं लिखता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट 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 ऐसे कर लेते हैं। लेकिन और चीज़ों के आगे लिखना हुआ, that would be a time taking job. So what we can do, we can click in the end, and now you can notice closely if I press like this, एक और प्लस नजर आ रहा है आपको यहाँ, control, meaning what you have to do before starting your fill series, before starting your dragging process, you have to press control. अब कंट्रोल प्रेस करके जब आप इसे ड्रैग करोगे, देख रहे हो साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स सेम। क्लिक किया, पहले आपने क्लिक छोड़ना है और फिर आपने कंट्रोल छोड़ना, पहले क्लिक छोड़ेंगे फिर कंट्रोल छोड़ेंगे। सो हमारे पास वो सेम डेट रिपीट होगी। सो सम टाइम ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक सेम डेट ही रिपीट होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने 10th लिखा है और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो 10th 11 12 13, और वो खुद यहाँ RD लगाना है, ND लगाना है, ST लगाना है, TH लगाना है, इट वर्क्स themselves, यानी you don't have to like taught them कि आपने यहाँ ये लगाना है, वो खुद कर रहा है। और अगर मुझे सब में 10 चाहिए तो सेम वर्क, कंट्रोल प्रेस करें, गेट इनटू द कॉर्नर ऑफ योर सेल, हैंडल जो हमारा होता है ड्रैगिंग हैंडल, और उसके बाद जो है वो आप उसको ड्रैग करना शुरू करें। This way, so now you will get the 10th. हमारे पास जो है वो 10 10 10 करके जो है वो आ जाएगा। So this is another way of doing this thing. Now one more thing, very interesting. See, हम पहले क्या कर रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले अगर हम 1 लिखते हैं और मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो वो सारा 1 आ जाता है, ऐसे ही है ना। Now what we can do कि अगर मैं 1 लिखता हूँ और अब मैं इसे ड्रैग करूंगा, देखना बाय यूजिंग कंट्रोल की, वही वो प्लस का एक साइन आ गया, और अब मैं जब इसे ड्रैग करूंगा तो फिर देखना ये क्या होगा, देख रहे हो सिंगल वैल्यू से, यानी मुझे 2 नहीं लिखनी पड़ी, बट इन दिस केस इट्स ऑलवेज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1, सिर्फ एक का इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर। 2 3 4 5 जैसे पीछे करके आए हैं, कभी 10 का कर लिया, कभी 100 का कर लिया, कभी 2 का कर लिया, वो इंक्रीमेंट इसमें नहीं हो सकते, बट एक का इंक्रीमेंट हो सकता है। एंड इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनीवेयर, यानी इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 7
15. We started from 718 is perfectly alright. तो आप 718 से शुरू कर दो सब सूरत में भी हमारे पास जो है it works fine. ये हमारे पास इस तरह से काम करेगा. And when you want to save your file, basic arithmetic we will not talking today, but in next lecture, next video we will talk about it. So what we can do, file, and then you have to click on save, and then you have to select your computer. अगर ऑनलाइन रखना तो यू कैन डू द वन ड्राइव ब्राउज करें और जहां भी आपने सेव करना है उसे सेव करना है. Generally what we do when we are saving our files, we usually save as Excel workbook. Excel workbook. This is very important Excel workbook thing. In few days you will notice कि हमारे पास जो है वो कुछ और formats के अंदर files होती हैं, and then we have to convert them into Excel workbook. Right? If you have any question, you can ask me the question right now. चेक हुई है? Sorry. असाइनमेंट चेक हुई है सर? असाइनमेंट्स यार सारी अभी अपलोड नहीं हुई है, मतलब लाइक एक रहती है अभी, मैंने इसलिए भी चेक नहीं की. सर वो PSL वाली